Namaskar everyone. Today I am going to teach you about division by two-digit number. So here exercise 4.4 question 1, divide the following. So first one is 1812 divide by 15, यानी हमें 15 के साथ उसका डिवीज़न करना है. So I am going to explain you in my notebook. So first one is 1812 divided by 15. So here 1812 divided by 15. So here first digit is 1. So 1 is smaller than 15. That's why I have to take two digits. Two digit is 18. So 15 1 ja 15. 18 minus 15 is 3. And then bring down 1. 15. So here is 31. It is greater than 15. So we can divide 15 1 ja 15 and 15 2 ja 30. So here is 50 2 ja 30. So 31 minus 30. So 1 minus 0 is 1. Now bring down 2. So ऊपर से कोई भी नंबर हम नीचे उतारते हैं और फिर भी इससे छोटा नंबर आता है और डिवाइड होता नहीं है तो ऊपर हमें एक ज़ीरो डालना पड़ता है. दैट इज़ वाई आंसर इज़ 120. राइट. अब इसका डिवीज़न आगे होता नहीं है. सो दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन 1. Another question I solve for you. Second one is 4872. So 4872 divide by 16. Here is 16. So 4872 divided by 16. 16 is a 4 is a one digit number, right? So we cannot divide. So let's take two digit. 48. 16 1 ja 16. 16 2 ja 32. 16 3 ja 48. So 16 3 ja 48. So here is 0 0. And bring down 7. So now next bring down 7. Right. कोई भी नंबर आप जब नीचे उतारते 7 is smaller than 16. So we cannot divide by 16. That's why we have to put 0. Now again bring down 2. So 16 3 ja 48. Right. 16 4 ja 64. 16 5 ja. ऐसा करते करते आपको जब तक 72 ना आए या उससे नज़दीक वाला नंबर ना आए तब तक करते रहना है. 80. Right. So 16 4 ja 64. 18 is greater than 72. That is why 16 4 ja 64. So 16 4 ja. Now 2 minus 4 is not possible. So 12 minus 4 is 8 and here is 6. So remainder is 8 and quotient is 304. So it is very simple. Right. So वैसे ही as it is exercise 4.4 सारे 1 to 6 क्वेश्चन आपको नोटबुक के अंदर करने हैं. Now next topic is estimate the quotient. So exercise 4.4 question 1, divide 7014 by 7 and we have to find the estimated quotient. So first we have to write this number into rounding nearest 1000. So 7014. Now nearest 1000 we have to write. So in 1000 there is 30 and it is 0. So 7 as it is. So nearest 1000 is 7000. So we have to divide 7000 with 7. So 7 1 ja 7 and here is 0. Bring down 0. जब भी कोई नीचे हम नंबर उतारते हैं तो नहीं चलता है तो डिवीज़न अगेन 0. So divide again 0. So divide. So quotient is 1000. So 1000 is estimated quotient and we have to find actual quotient. Actual quotient means 7014 divided by 7. So 7014 divided by 7. 7 1 ja 7. So here is 0. Bring down 0. So here is 0. Bring down 1. 1 we cannot divide. So that's why we have to 0. And again bring down 4. So 7 2 ja 14. So 0 0. So answer is 1002. So 1002.
2. So actual quotient is 1002. Now question is compare the estimated with the actual quotient. Which is greater? So you can see actual quotient is greater. So actual quotient is greater. Now question 2. Estimate the quotient of the following. So next one is estimate the quotient. So here first question is 2951 divided by 12. So 2951 divided by 12. So here first we have to find the actual division. Divide by 12, right? So 12 1 ja 12, 12 2 ja 24. So here is 5, bring down 5. 12 2 ja 24, 12 3 ja 36, 12 4 ja 48, 12 5 ja 60. So 12 5 ja 60. So 12 4 ja 48. Now 55 minus 48. So here is 15. 15 minus 8, 7. And here is 4. 4 minus 4, 0. Right? And again bring down 1. So 12 5 ja 60. 12 6 ja 72. 72 is greater than 71. So 12 5 ja 60. So here 71 minus 61 minus 0 is 1 and 7 minus 6 is 1. So remainder is 11. And quotient is 245. Now you have to write rounding number nearest 100. इसका rounding number nearest 100. 0 and 0. So it is 4 and 2 as it is. So estimated quotient is 200. So first one answer is estimated quotient is 200. मीन्स आपको पहले सारों का डिवीजन करना है, जो भी क्वोशंट आए उसका राउंडिंग नंबर्स ले लेना है. थर्ड वन, राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 100 एंड डिवाइड द राउंडिंग नंबर बाय 12. डिवाइड द राउंडेड नंबर बाय 12. उसका आपको 12 के साथ डिवीजन करना है एंड क्वोशंट फाइंड करना है. इट्स सेम एज इट इज क्वेश्चन 2 दैट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. So it is about exercise 4.5. Now exercise 4.6. So exercise 4.6 is first one. The cost of a ticket for a team of 12 players is 62,208. What is the cost of each ticket? Means the cost of a ticket for a team of 12 player. यानी 12 प्लेयर का कॉस्ट टोटल दिया है आपको. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट मीन्स वन टिकट का कॉस्ट क्या है वो फाइंड आउट करना है. सो वी आर अप्लाइंग क्रॉस प्रोडक्शन मेथड. सो हियर वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट. सो वी हैव टू राइट कॉस्ट एट द राइट साइड एंड टिकट इज लेफ्ट साइड. राइट. टोटल कॉस्ट इज 62,208. 62,208. It is the cost of 12 players, right? And we have to find the one ticket cost. All right. So one here and cost we don't know. So first we have to multiply 62,208 with 1. So answer is 62,208 and divide by 12. So here divide by 12. Now 12 5 ja 60. So 62 minus 60 is 2. Bring down 2. 12 2 ja 24. 24 is greater. So 12 1 ja 12. So 2 minus 2 is 0. 2 minus 1 is 1. Again bring down 0. 12 7 ja 84. 12 8 ja 96. 12 9 ja 108. So 108 is greater. So 12 8 ja 96. So here is 4. Again bring down 8. 12 4 ja 48. So it is 0 0. So answer is 5,184. So total cost of each ticket. Total cost of each ticket is 5,184. Now second one, a book distributor ordered 2,363 books. मतलब उसने इतनी बुक्स ऑर्डर की. He plans to evenly distribute the books to 17 bookstore. उसने ये बुक्स
17 बुक स्टोर में डिस्ट्रीब्यूट की। हाउ मेनी बुक्स विल ईच बुक स्टोर रिसीव, तो 1 बुक स्टोर वालों को कितनी मिलेगी। सो वी हैव टू फाइंड बुक्स, सो बुक्स राइट साइड, here books right side and here bookstore, right? So books right side and bookstore left side. So book distribute order, total books is 2363 these books, and it distributed total 17 bookstore. How many bookstore? 17. So 1 bookstore के अंदर कितनी बुक्स है वो मिलेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2363 एंड डिवाइड बाय 17. सो हियर इज 17. 17 1 जा 17. सो 23 minus 17, 18 19 20 21 22 and 23. So it is 6. Bring down 6. So 12 17 5 ja 85. 85 is greater. So 17 4 ja 68. So 17 3 ja 51. So here is 51. 6 minus 1 is 5. 6 minus 5 is 1. So 15. Again bring down 3. Now 17 5 ja, you know 85. So here we have to take 17 7 ja 190 versus 17 8 ja 136. 17 9 ja 153. So 17 9 ja 153. So here 0 0 0. So answer is 139. So total 1 बुक स्टोर में कितनी बुक्स गई होगी, हाउ मेनी बुक्स विल ईच बुक स्टोर रिसीव। सो ईच बुक स्टोर रिसीव 139 books, right? So this is about exercise 4.6, question 3 and 4 that you have to do by yourself. So today our chapter is over. So addition is finished. Now our PA1 syllabus is also complete, right? And you have to do here worksheet. I think multiplication till multiplication is done, right? Only division worksheet is remaining, and this is first question, divide and verify your answer. As I explained कि 2 digits का नंबर का डिवीजन कैसे करना है वो आपको करना है, and estimate and rounding numbers that you already know, right? And solve the following word problem I explained. If you have any doubts in that worksheet, you can directly message me, or then I will send the solution, right? So chapter 4 division की worksheet आपको होमवर्क के अंदर करनी है. So 1 to 4 वर्कशीट सारी आपको होमवर्क में करनी है. 1 to 3 तक तो कंप्लीट है, 1 to 4 की उसमें आपको कहीं पर भी डाउट है, यू कैन मैसेज मी. थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.